Welcome to Sheetal Ma'am की class. Welcome children. Now, before we start with the ray diagrams for concave and convex mirror, let us understand some rules. क्योंकि जब तक वो rules समझ में नहीं आएंगे, how will you draw the ray diagrams? The concept will not be clear. In our book, children, there are 4 rules printed. जहाँ पर हम decide करेंगे कि what will be the pattern of incident ray and then the reflected ray pattern comes. But you will have to remember the patterns accordingly. अब कोई भी ray diagram draw करने के टाइम इन 4 में से कोई भी 2 rules we will be using. And because of that, all of you should be very clear with these rules before we start with the ray diagrams. Okay? Now first property says कोई भी curved mirror में अगर इंसिडेंट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेट मी ड्रॉ एंड शो इट टू यू. लेट्स से दिस इज एन इंसिडेंट रे व्हिच कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये कॉनकेव मिरर है एंड ये एक कॉन्वेक्स मिरर है. यहां पर भी इंसिडेंट रे इज पैरेलल. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इंसिडेंट रे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह से मिरर पे फॉल करेगी, लेकिन reflected ray का direction we cannot decide. It is always decided by the mirror and some rules. Here the rule says कि अगर incident ऐसे parallel आ रही है तो reflected ray will always pass through the focus. That's all. जब भी कोई parallel incident ray draw करो तो in that case make sure that your reflected ray passes through the focus. Right? Now we know that in case of a convex mirror, the focus lies behind the mirror. तो इस केस में there also it will pass through the focus. इस तरह से पीछे पास करोगे and then you will diverge the ray. But still you see the pattern. Incident ray parallel थी and दोनों ही केस में reflected ray is passing through the focus. This might be bit confusing for you, लेकिन ये अब समझ में आना चाहिए कि हर एक कॉन्वेक्स मिरर का फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज बिहाइंड, राइट. तो वो वर्चुअल साइड पे होता है. तो जब हम फोकस से पास करेंगे तो ये रे को पीछे ले जाना पड़ेगा ऐसे. बट वी नो दैट द मिरर इटसेल्फ इज डाइवर्जिंग, तो बाद में वो रे ऐसे डाइवर्ज होगी. But where is the direction of the reflected ray? From the focus. So this becomes your rule 1 for drawing ray diagram. Learn कर लो in short. Rule number 1 for ray diagram says if incident ray is parallel to the principal axis, the reflected ray will always pass through the focus. Because in majority of the diagrams, the first rule is going to be used. Now children, let us begin with rule number 2. 4 में से एक already done. Here comes the second rule. ये rule में the condition says incident ray is passing through focus. मतलब देखो, the ray which comes passes through the focus. Can you see here? Same way यहाँ भी कर सकते हैं. The incident ray passes through the focus. Okay? Now what does this rule say? अगर इंसिडेंट रे ऐसे फोकस में से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे रिवर्स हो जाएगा. दैट इज इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगेन आई रिपीट, देखो इधर कॉनकेव मिरर में दिस वाज द इंसिडेंट रे व्हिच वाज पासिंग थ्रू द फोकस. अगर इंसिडेंट is passing through the focus, then in that case the rule 2 states that the reflected ray becomes parallel to the principal axis. अब in case of a convex mirror, again the same, ये इंसिडेंट रे है जो फोकस से पास हो रही है, लेकिन as it is a diverging mirror, थोड़े डायग्राम में इससे चेंजेस होते एंड रिफ्लेक्टेड रे देखो ऐसे पास होगी and it will bounce back from the mirror, and look at this, it is parallel to principal axis. So this will become your rule 2, जहां पर ये learn करो कि अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है
So reflected ray will become parallel to the principal axis. I hope rule number 2 is clear. Now children, we start with rule 3, one of the most important rules. You know why? Total 8 mirror के ray diagrams. 8 में से 7 ray diagrams में we will be applying this rule. Now what is it? The rule says that if the incident ray passes through the center of curvature. Let's try out. ये रही incident ray and this center of curvature से ऐसे pass हो रही. Same way I can draw it here also. Here is the incident ray and it passes through the center of curvature. Okay. Now in this case children, the rule says that अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करेगी, डेफिनेटली बाउंस होगी, रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन इट विल गो अलोंग द सेम पाथ. मतलब उसी पाथ से वो रे वापस ऐसे रिबाउंस होके एंड विल कम बैक. सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड द सेम बिकम्स योर रिफ्लेक्टेड रे. समझ में आ रहा है? द रूल सेज, कर्व्ड मिरर का ये रूल है कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपना पाथ चेंज नहीं करती और सेम पाथ पे इट बाउंसेस बैक. यहाँ भी वही होगा. इफ इंसिडेंट रे passes through the center of curvature, the reflected ray also goes along the same path. Now we have to understand the reason behind it. The rule says कि अगर इंसिडेंट रे इस तरह सेंटर से पास होती है तब actually this incident ray is hitting the mirror making an angle of 90 degree. Okay? Always जब भी इंसिडेंट रे passes through center of curvature उसका मिरर के साथ एंगल कितना होता है? 90. Whenever this case happens तो इंसिडेंट रे becomes perpendicular to the curved mirror, right? अब perpendicular is a mathematical term, लेकिन as I told physics में perpendicular में we use the word normal. तो हम लिखेंगे कि इस केस में इंसिडेंट रे falls normally, okay? It falls normally on the curved mirror. Means the angle between incident ray and the mirror is 90 and because of that what happens is वो उसी path पे bounce हो जाएगी and there is no change in the path. So make sure ये rule has to be remembered very well, right? I repeat again. If incident passes through center of curvature, it will reflect back in the same path without changing the direction. वो उसी path पे वापस आती है. रीजन ये लर्न कर लेना. इसका एक ही रीजन है because whenever it goes through the center of curvature, actually it forms a right angle with the mirror, and that is the reason of the bouncing back on the same path. Now we go to the last and the fourth rule, right? The fourth rule says children that if incident ray goes oblique, कोई acute angle पे वो hit कर, like देखो ऐसे इंसिडेंट रे हिट्स द मिरर. ये हो गई इंसिडेंट रे. हियर आल्सो आई ड्रॉ इट शो टू यू स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल, राइट? यहाँ पर एक ओब्लिक एंगल क्रिएट होता है. तो व्हेन द इंसिडेंट रे गोज ओब्लिकली तो रिफ्लेक्टेड रे, राइट, विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन and in that case वो reflected ray भी ऐसे oblique pass हो जाएगा like this way. Okay? तो what is to be ensured in this one? ये जितना angle of incidence होगा the same will be the angle of reflection because we have to make sure that it follows the law of reflection. करेक्ट? अगर इंसिडेंट रे ओब्लिक आती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी ओब्लिक जाएगी. ओब्लिक का मतलब होता है कोई एक्यूट एंगल पे एंड इन दैट केस whatever will be your angle of incidence the same has to be the angle of reflection. Okay, now all the four rules are done children and in this case let us quickly summarize.
सबके पास ये इन शॉर्ट लिखा हुआ रेडी होना चाहिए. Children, there are 4 rules. Rule number 1, 2, 3 and 4. We have 4 conditions for our incident ray and सामने 4 conditions अपने आप set होती है for reflected ray. When the incident ray is parallel to principal axis, the reflected ray will pass through the focus. अब second उसका reverse. If incident ray pass through the focus, तो उसका reverse हो जाएगा. Reflected ray will become parallel to the principal axis. Number 3. अगर incident ray passes through the center of curvature, then reflected ray will also pass through the center of curvature and it will go along the same path. And if last condition, agar incident ray goes oblique, then the reflected ray also goes oblique such that the angle of incidence and the angle of reflection formed are equal. Correct? Now in every ray diagram, right? 4 में से कोई भी 2 रूल यूज करेंगे in order to get the images. एक साथ 4 यूज नहीं करने हैं. But you remember the number of rules. क्योंकि वो 8 ray diagrams में every time out of these 4, 2 rules we will be using. So you have to be clear with rule number 1, 2, 3, 4 exactly that what are the conditions for incident ray and what will be the conditions for the reflected ray. Correct? Again I repeat, in 4 में से the most used rules are 1 and 3. Maximum. सबसे ज्यादा यूज इन रे डायग्राम्स 1, 3 का होगा. देयर आर हार्डली 1 डायग्राम्स वेयर वी आर यूजिंग 2 and 4. सो ईच वन ऑफ यू अगर नहीं क्लियर है तो एक बार वापस रूल नंबर 1 and 3 go through करो, because in most of the ray diagrams we will be using these 2 rules. Still if you have doubts, please send your doubts in the comments. Thank you.